Good morning, student. This is the second video of chapter 4, 11th standard economic. In this video, we can going to discuss individual supply and market supply. In last video, we can see the factor affecting supply, right? Factor affecting supply and which other factor is affecting supply. We can see, but in this video, we can going to see individual supply and market supply. Now, individual supply and market supply is so easy. Now, see, supply in economic is also classified individual or market supply, right? Individual supply is a supply of goods by individual firm or seller, right? Supply by individual or firm or seller is given at, at a given price a particular point of time. The sum of total some individual supplies, right? जब sum of all individual supply of all existing seller is the market is called market of supply at the given price of at the given price at the particular point of time, right? For example, there are five people A, B, C, D, right? A providing A supplying the goods, right? Then is called the individual supply. B also supplying the goods in market, then it also called them individual supply. And C, D, E, they are all supplying the goods. They individual supplying the goods in the market. This is called the individual supply. But they are make one group and then can supply. Then is called the market supply, right? अगर वो एक साथ मिल के सब सप्लाई करते हैं ABCD, right? Then it called the market supply, right? Same यहाँ एग्जांपल भी दिया है, right? For example, A supplying, right? Different firm in supply different firm in kg, right? And per kg price per kg, right? तो यहाँ 80 kg सप्लाई हो रहा है तो 10 रुपीज़ के हिसाब से, राइट? 180 kg 20 रुपये के हिसाब से सप्लाई हो रहा है, राइट? ए सप्लाई कर रहा है एंड बी सप्लाई कर रहा है, इंडिविजुअल सप्लाई कराएंगे. बट इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? मार्केट सप्लाई, राइट? इंडिविजुअल फॉर्म एक फॉर्म इंडिविजुअल सप्लाई करता है तो उसका इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे. अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम मार्केट सप्लाई कहेंगे. मतलब 80, 60, 140, 180 एंड 180 एंड 100 इज कॉल्ड 280, राइट? ये मार्केट सप्लाई कहलाएगा, राइट? सेम जैसे हमने मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड दिखा था, राइट? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड जैसा था, सेम उसी तरह, बस वहाँ पे था डिमांड था. अगर एक इंडिविजुअल डिमांड होता है पर पर्सन, एक इंसान डिमांड करता है, एक फॉर्म डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा. अगर एक से ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड कहलाता था, राइट? सेम यहाँ पे सेम चीज़. नाउ वी कैन सी द एक्सप्लेनेशन थ्रू द डायग्राम. हम एक्सप्लेन डायग्राम को थ्रू देखेंगे, राइट? यहाँ पे एक फॉर्म ए दिया हुआ है, राइट? फॉर्म ए सप्लाई कर रहा है, राइट? दिस इज अ यूनिट 100, 200, 300 एंड दिस इज द प्राइस, राइट? ए सप्लाई कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जांपल जब 10 रुपीज़ का था तो 100 यूनिट सप्लाई किया, राइट? सेम 20 रुपीज़ भाव बढ़ा तो 200 सप्लाई करना शुरू कर दिया. 30, 40 इस तरह 60 जब 50 जब हुआ तो वो 400 यूनिट सप्लाई करना शुरू कर दिया. सेम वेज बी भी सप्लाई कर रहे हैं उसी की तरह, जो थोड़ा आगे पीछे, एंड सी भी सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी ए बी सप्लाई कर रहा था. इन दोनों को सप्लाई मिला दिया जाए, इन दोनों प्लस कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट सप्लाई कहलाएगा, राइट? और मार्केट सप्लाई कुछ इस तरह होगा, राइट? मतलब इन दोनों का टोटल, फॉर एग्जांपल इसका 100 है एंड इसका 50 है, राइट? इन दोनों का टोटल क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई, राइट? यहाँ पे 150 मतलब बिलो द 200, तो मार्केट सप्लाई इसको कहेंगे मार्केट सप्लाई. गेटिंग? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई फंक्शन, राइट? सप्लाई के अंदर कुछ टॉपिक है, वी कैन सी व्हाट इज सप्लाई फंक्शन. Now our new topic is supply function, right? The supply function specify a functional mathematical relationship between supply of a goods and its determinant.
It represents that the supply of one goods is determined by the many factors. In other words, supply function is the mathematical representation of the relationship of the supply of goods and with the determinant, right? So this is a formula, right? Like a relationship बता रहा है supply and determinant, right? Now we can see the law of supply, right? जैसे law of demand था third chapter में, same to same law of supply है, right? We understood that demand is always stated at a particular price, supply is also stated at a particular price. When all the other factor affecting supply are assumed to be constant, like as a price increase supply expand, right? Price increase then supply expand, and price decrease supply contract, right? There is a direct relationship between, right? Thus there is a positive relationship between supply and the price and supply, and the relationship is called law of supply. Let's just understand assumption of law of supply, right? So there is positive relationship between, क्यों? क्योंकि जब supply फटाफट फटाफट सप्लाई करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट निकालेंगे, और जब प्राइस अगर गिर जाते हैं तो सोचते हैं कि कम कम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो इसे मैंटेलिटी है ट्रेडर्स की। तो यही कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सप्लाई भी है, राइट? अजप्शन, law of supply rests a certain assumption. There are several factors affecting supply of the good. The particular point of time decide price. However, the law of supply assumes the effect of the given point of time. Actually, some of the other factor can be have a more exerting influence on the supply than price. However, we assume this to be constant. Some important are price of factor production remain constant. There is no change in prevailing state of technology. The level of competition means number of seller in market as remain same, right? मतलब ये सब assumption मतलब जो दिया है, right? ये होना चाहिए, उसके उसके बाद ही जो प्राइस और सप्लाई है वो सेम रहेंगे, राइट? ये सब assumption है वो सेम होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस इन ग्रोथ, राइट? कांस्टेंट होना चाहिए। जो भी अदर फैक्टर है, जो भी यहाँ पे पहले बोल दिया, जो भी अदर फैक्टर है अदर देन प्राइस, प्राइस के जो भी फैक्टर है वो सप्लाई मतलब कोई अफेक्ट नहीं करेगा सब प्रोडक्ट को। सप्लाई एंड प्राइस आर द सेम डायरेक्शन, मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, getting? Now schedule and diagram expansion of supply. A schedule diagram of selling, a schedule showing of a seller willingness to sell a goods at various prices called supply schedule. The following table shows hypothetical explanation example showing the willingness of seller sell apple in different price, right? तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और टेबल दे रखा है, इसके हिसाब से हम जानेंगे क्या चीज़, राइट? there the price of apple in kg, right? The price of apple is 50 rupees kg, right? And the supply of apple in kg 200 kg, right? जब प्राइस 50 होता है तो 200 kg सप्लायर सप्लाई करता है, राइट? सेम में जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लायर अपना जो एप्पल है वो ज़्यादा इंक्रीज मतलब उसका भी जो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, राइट? 60 होता है 400 kg एप्पल सप्लाई किया मार्केट में, इससे जब 900 हो गया तो 1000 kg सप्लाई किया। मतलब इन शॉर्ट जैसे ही प्राइस इनक्रीज हो जाएंगे सप्लायर फटाफट अपना माल सप्लाई करेगा मार्केट में। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई, राइट? और सेम इसको एनालाइज नीचे किया हुआ है। नाउ वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. There are two reasons of positive relations between price and. First point, seller pursue the objective of the profit maximize, and the price rise, then they see the possibility of increasing the profit, thus the supply more at the higher price, getting? ज़्यादा वो सेलर है वो अपना प्रॉफिट देखना चाहता है, मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, इसलिए जब भी प्रॉफिट इंक्रीज सब
ऐसे प्राइस इंक्रीज होता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट देखते हैं और उसके लिए ज़्यादा सप्लाई करता है. द प्राइस राइज, द प्रोड्यूसर हु विल not willingly to sell the stock at lower price started selling the the stock, right. तो ये दो रीज़न है कहीं ना कहीं, तो रिलेशनशिप बताता है, राइट. तो दैट इन दिस वीडियो दैट मच ओनली, राइट. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में कैन सी द नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई. गेटिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.